ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु द्वादशाक्षर स्तोत्रम् अथ ध्यानम्। वंदे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रं वंदे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम् वंदे सदमन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यं वंदे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत्। नासाग्रे लोचनकृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं। शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं। मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं। तुलसी मालया पद्म मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं। ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां
मानं विमर्घ जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनकृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्मा मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय
ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्टशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितं
असंख्यचन्द्रसङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वद कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्मा मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओङ्कारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदैवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय
द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति। सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत्। नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं। शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं। मणिमन्मुकुटं तद्वद कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं। तुलसी मालया पद्मा मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं। ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओङ्कारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय।
वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्टशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनकृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वद कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसी मालया पद्मा मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय
मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनकृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य
रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने
द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत्। नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं। शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं। मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं। तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं। ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओङ्कारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं
नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्टशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वद कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्मा मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदैवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय
ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य
वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वद कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्मा मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृत्कमले स्थितं ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय। यस्याक्षरस्य निरवध्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं
यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्तिर्भुक्तिमुक्तोश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत्। नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं। शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं। मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं। तुलसी मालया पद्म मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्ण मन्तर्हृतकमले स्थितं। ध्यात्वेयं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं। जपान्ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओङ्कारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयीश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्टमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वृताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। तेषां हि दुष्टशिशुपालककंशकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्घजगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय
तस्मै नमो भगवते परमामृताय। सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्धनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। देवाय भक्तभवसागरतारणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजस्व स्तन्वन्ति यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय। यस्याक्षरस्य निरवध्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति। सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्।